Good morning, students. Today we are going to study direct taxation TYBCom SEM 5th. Myself, Shaikh Irshad Wajid Ali. Income from other sources, section 56 till section 59. These are the different sources of income which comes under income from other sources. For example, horse race, gift, family pension, reality shows, interest from the bank, deposits, debenture interest, investment, then games, lotteries, and dividend from bank and cooperative sectors. What is income from other sources? Any item of income which does not fall under any of the head. Example, salary, income from house property, profit from business और कैपिटल गेन. दैट मीन्स कोई भी इनकम इसको छोड़ के देन इट इज टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम. दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. नाउ विल गो फॉर ए फॉर्मेट. व्हाट यू हैव टू राइट? computation of income from other sources, name of the assessee, his status, whether individual, previous year, assessment year. Okay, then we'll come to a main formats. Number one, dividend from foreign company and cooperative society. It is taxable income and it is legal income. उसमें से क्या लेस करेंगे? रियलाइजेशन चार्जेस या इंटरेस्ट ऑन लोन. दैट मीन्स हमने क्या किया है कि ये डिविडेंड रिसीव करने के लिए हमने लोन लिए थे. अब वो लोन पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट क्या करेंगे? माइनस करेंगे. बिकॉज ये डिविडेंड के लिए हमें क्या करना पड़ा था? लोन लेना पड़ा था. विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इट इज एन इलीगल इनकम, तो इट इज फुल्ली के फुल्ली टैक्सेबल. Employee contribution to provident fund is also taxable. Less paid and credit. Whatever we paid the amount from employee contribution, it will be minus from that. Same way, interest on securities. Suppose we put up a money in securities. तो if we receive interest, वो क्या होगा? Taxable. उसके ऊपर के whatever expenses we pay, वो क्या होगा? Minus. Realization charges, interest on loan taken for this securities, तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम मशीनरी एंड बिल्डिंग ऑन हायर. दैट मीन्स हमने क्या किया? सपोज ये हमने बस क्या किया? भाड़े पे दे दिया टूर्स एंड ट्रैवल को, तो वॉट एवर द इनकम विल बी देयर, वो अपने लिए क्या होगा? टैक्सेबल. ये लीगल इनकम है. लीगल इनकम पे कोई भी लीगल एक्सपेंसेस करोगे तो माइनस होगा. एग्जाम्पल, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन. ये इनकम में से ये एक्सपेंसेस क्या होंगे? अपने माइनस होंगे. नेक्स्ट, इफ वी रिसीव ए फैमिली पेंशन. यहाँ देखो फैमिली पेंशन दिया, ओल्ड एज. वॉट एवर द अमाउंट विल बी देयर, इट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के हिसाब से. इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन. जो भी फैमिली पेंशन रिसीव हुआ उसका 1/3. फॉर एग्जाम्पल 12,000 फैमिली पेंशन था, 1/3 होगा 4,000. और फिक्स अमाउंट 15,000. ये दोनों में से विच एवर इज लोअर, वो क्या होगा? अपने लिए एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के हिसाब से. नेक्स्ट, एनी गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स मोर देन 50,000. 50,000 के ऊपर अगर नॉन रिलेटिव्स के पास से कोई भी गिफ्ट मिलेगा तो दैट मीन्स फुल्ली की फुल्ली टैक्सेबल. ओके, यहाँ दिया है गिफ्ट्स. कीम एन इंश्योरेंस पॉलिसी इफ यू रिमूव एंड इन केस वी रिसीव द अमाउंट, वो भी क्या होगा? फुल्ली की फुल्ली टैक्सेबल. नेक्स्ट, शेयर फ्रॉम प्राइवेट कंपनी विदाउट एनी कंसिडरेशन, वो होगा टैक्सेबल. प्रीमियम ऑन शेयर बाय प्राइवेट कंपनी, वो भी क्या होगा? अपने लिए टैक्सेबल. नाउ
if you receive any amount on interest on compensation या enhancement compensation, तो जो भी अमाउंट होगा उसमें से 50% ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा. ओके. सेम वे एडवांस फॉर कैपिटल असेट ट्रांसफर या फॉरफिटेड, दिस वाज द सेम एग्जांपल ऑफ दिस बस. ओके, इफ यू रिसीव एनी इनकम फ्रॉम कैपिटल असेट्स, क्योंकि वो बस बिजनेस के लिए यूज होगा, उसमें से लेस वॉट एवर वी पे जनरल एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग दैट इनकम, वो होगा माइनस. फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, वो क्या होगा, माइनस. नेक्स्ट, इफ यू हैव एनी डिडक्शन अर्लियर, यू मेड एनी डिडक्शन, कोई डिडक्शन किए और वो अभी हमें रिसीव्ड हुआ, तो वो क्या होगा बेटा, ऐड करेंगे. दैट मीन्स रिकवरी अगेंस्ट ए अर्लियर डिडक्शन. और लास्ट में मिलेगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर sources. This is your final taxable income. In addition to this, some theory part I have given, that is charges under specific under section 56 subsection 2. ये सब मेन हेडिंग है जो हमने पीपीटी में शो किए. This is for a notes purpose, huh? Both. Now very important, if you receive a gift which exceed 50,000, in case of money, it is fully taxable. Same way, immovable property. What is immovable? That cannot move. For example, house. So that is without any consideration होगा, and stamp value of property exceed rupees 50,000. That means fully taxable. Some consideration will be there. Then what we have to do? Difference between stamp duty and consideration. Whatever the difference comes, if such difference exceed rupees 50,000, it will be a taxable, or 5% of consideration. Consideration का amount ढूंढेंगे, उसका 5%, and जो भी whichever will be higher, वो अपने लिए taxable होगा. Same you can do for a movable property. Only important in this is any amount received from non-relative more than 50,000 will be fully taxable. That is very important. Okay. Next, same way deduction under section 57. Whatever पहले क्या हुआ, माइनस हुआ था, वही सब इधर दिया हूं मैंने. Example, expenses for realization of dividend and interest, employee contribution to provident fund, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन, ये सब क्या होगा, डिडक्ट होगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन जो मैंने बताया था 1/3 या 15,000, विच एवर इज लोअर. सेम वे स्टैंडर्ड इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन, उसके लिए 50% एग्जेम्प्ट है. एंड एनी लीगल इनकम और वॉट एवर वी डन लीगल एक्सपेंसेस, वो भी क्या होगा बेटा, डिडक्शन होगा. Okay, that is deduction under section 57. Now, expenses disallowed, that means fully taxable under section 58 के हिसाब से क्या है, any personal expenses taxable क्योंकि वो business income नहीं है या business expenses नहीं है. Any interest payable outside India on which tax has not been paid, वो भी क्या होगा, disallowed होगा. Any salary paid outside India on which tax is not paid, disallowed. Any income and expenses on winning from lottery, crossword, puzzle, race, card game, other game, gambling, betting, this all are illegal income. So illegal income is what we say, disallowed. They are fully taxable. And this expenses is also disallowed, means you cannot take any deduction on this. Okay. Same way, if you pay any expenses more than 10,000 in cash, that means fully disallowed. Provision for gratuity on retirement, disallowed. Employer contribution to non-statutory provident fund is a disallowed, means you cannot take a deduction for this expenses. इसमें कोई माइनस नहीं ले सकते हो. Okay, this is under section 58. Now,
Some income which are fully exempt, no need to pay tax. This is under section 10. Number 1, agriculture income. Number 2, any sum received from the member of Hindu undivided family. Expenses on disaster compensation, receipt from LIC, payment from Sukanya Samriddhi account, scholarship received, interest on securities, allowances given to MPMLA, government award and rewards if you received any Padma Shri, Chakra award, okay, or any award like how Sachin Tendulkar has received, pension received by recipient of Glenatory Award, pension to family member of armed force, dividend from Indian company, income from UTI, that is Unit Trust of India. This all income are fully exempt. Next, before saying thank you, all this source of information is from Google search and Manan Prakashan. I thanks to all the students